first project which I did was thin film deposition. Yeah. That time there was a group working on the making these infrared lenses which can be seen by the army people. They wanted it. So they wanted to have camera which they can see in the night. So Uh-huh. that group was doing that. So I became part for 2 months to do the project, and that was mostly thin film deposition. Yeah. So It was very interesting. yeah. So basically, the application of thin film is, and the physics is very vital for modern science, especially the semiconductor. So what we do in general is that we have uh, uh, PECVD, physical vapor chemical deposition. Then we have CVD, chemical vapor deposition. So these are the methods which we use, and this is done in the vacuum. Like those of you who are familiar, so atmospheric pressure is your whatever is atmospheric pressure. If you reduce that pressure to even exponentially 6 times, that kind of vacuum is used, ultra pure, so that there is no defect, because you don't want any contaminant to deposit. Thin film means what? A layer you are trying to deposit on certain object. So when you are trying to deposit an object, you want to make sure that there is no other contaminants there, which is uh, which is going to deposit first, and then if your film is depositing on top of it, that will be a defect, a failure point later on. So you don't want that one. That is why it is done in very, very ultra uh, uh, pure environment and the vacuum chambers. And in the vacuum, basically, either you do the chemical reaction or you do the physical reactions. So, Bhavanji, we do also the same thing. We use the RF to bombard on different layers, like whatever is the film. So imagine that, let's say, for example, copper, you are copper, or let's call tungsten. These are the very common one we use. So, or can be anything, but I'm just giving you a tantalum. So basically, what you do is that you create a anode and cathode. So basically, your anode point is going to be a target, we call it, very ultra pure. Let's say, for example, you are trying to deposit a copper film. So on the anode point, you will have a copper target, and on the cathode point, you will have a wafer where you want to deposit in vacuum chamber, and there is lot of magnetic systems in between to ensure that uh, uh, from the uh, from the target point to the object or wafer, everything is kind of maintained so that all the deposition is happening properly. That is kind of mechanism on the side, but main physics is that by RF in that vacuum, you bombard on the copper and you ablate few copper ions, and then you force those copper ions to go on the wafer at the cathode, which is at the bottom, to deposit. So this is how the a copper thin film is deposit. Same mechanism hold for any other materials like tantalum or tungsten or aluminium, or uh, any other things. So that is what I have been doing. These are the films, which is basically what happens is that when you make the transistor in the semiconductor industry, you first make the transistor on the wafer. Now the transistor is like so that your electrons can move right off and on for Aryan and other people. That is the transistor function. You want signals to move, and in that process to do that,
We have one point is called source, other point is called drain, and then there is a gap in between. Now you when it is off condition, there is nothing moving between these two. It is just like a kind of you can call it a dam. A dam is there, and nothing is moving there. But suddenly, what you do is that you create a voltage and in between the source and drain, and that voltage kind of get induced, or you can call it introduced. Then suddenly a charge from source can go to drain. So now other analogy will be that a sluice gate has been opened and now water can flow from the dam, one side of the dam to the other side of the dam. So this is what we do in transistor. Now you have millions of transistors. Now you want to connect those transistors to the real world. So interconnect we do also on the semiconductor level on those computer chips. And that is where all these thin film depositions are played, because you need tungsten. Tungsten is mainly used in the for the voltage I was telling, that source and drain to gate, sluice gate. In the gate creation, tungsten is used as a material and many other things. And then in the back end for the interconnect, aluminum and copper is used. So basically, just like we do the wiring in any place, at the semiconductor level, we do the transistor and then we wire so that it can connect to the uh, other functions, and so that is where the semiconductor industry uses all kind of thin film deposition. So this is the main application of the thin film. And then pretty much the similar physics is used for, you can do the oxide SiO2 deposition, you can do many other things. Very nice. Thanks. We are. Acha, Is that Amarnath ji, recently in the news it was there that Vedanta has broken down with Foxconn, and the reason given is this, that there was no consensus on technology provider. So what is this problem actually? I mean, Foxconn itself is a technology provider, no? Yes, so Foxconn is a manufacturing provider. Okay. Foxconn. So Foxconn is basically it has expertise in manufacturing. Just like in America, if I can give you analogy, there were two companies. IBM was a leader in technology in semiconductor one time in 90s, and Intel was a leader in manufacturing technology of semiconductor. They were so like IBM could not make yield to 90%, but Intel could make yield to 90%. Okay, so that was the difference. So basically, um, IBM was not very good at copy exact. Intel was known for the copy exact. They were so good at copy exact that they could reproduce the machines. All the machines can do the same job almost identically. But IBM, we could not do the same thing. We had problem. That's why the yield loss was there. So so manufacturing is also very important, because it's one thing to make a piece wise, one piece, two piece, 10 piece in the pilot line, but when you have to do a mass production, manufacturing becomes very critical. How do you do it? Because you don't want 50% to go waste, right? Because it's very expensive process. So that is where Intel had a big edge. Anyway, that is lost now. But same way, the Foxconn had a in the basically the manufacturing technology of the semiconductor assembly plant. They were very good at that. So they can assembly and test. They were very good at that, and that's why. But those things are kind of lower level technology. I mean, those
those are not considered anymore semiconductor like high tech. They are like your mechanical parts. How do you assemble it? Main thing, the technology in the semiconductor is who makes the uh, semiconductor basically, and that is known by the node. Now we have already gone up to 2 nanometer. So like I was explaining, in between the source and drain, there is a uh, uh, there is a kind of what you call the for the voltage. You have a gate. So in the gate, you have a little bit of oxide. That oxide length is known as the node. That how much is the oxide length? And now that is 2 nanometer. That 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 oxide length, it used to be in micron when I started this industry in the late 80s. Now it is 2 nanometer, and TSMC has been able to produce that chips 2 nanometer gate width, we call it. So so that is the top of the line. Of course, it's not easy. Not everybody can do it. Uh, what is Intel is struggling even to make the 10 nanometer thing. I was part of the development team at Global Foundry for 7 nanometer. We couldn't do it. So all the technologists, we all got fired. So, and Sanjay Jha was the CEO that time. Sanjay Jha was the CEO of the Global Foundry that time. So it's, but uh, but somehow TSMC, that Taiwanese company, is very good in manufacturing now. They have they not only did the 7, they did successfully 5, then 3, then 2. Now they have gone all the way to 2, and that is why they have very good partnership with NVIDIA, who designs. So NVIDIA designs a chip which TSMC can manufacture, and everybody else is now kind of falling behind, like Intel and other companies, AMD. They are falling behind. So No, so my question was India did not go for 3 nanometer or 2 nanometer. Even 7 nanometer is good enough. yeah, Recently, even any is good enough. Like Micron, I mean, first see, very simple thing is to do the memory chips, which is Micron making. And yeah. Micron CEO is Indian right now. There are so many companies of semiconductor whose CEO are Indians. India, I don't know what is wrong with Indian politicians. We should have jumped into this industry in 60s. Now it is a $500 billion industry, more than that. And India could have been the leader had it gone into this in the 70s and 80s. But I don't know. We didn't have the political will to do it. And then we missed this whole industry. And now you find out that chips are needed for everything. Has become a raw material for everything. You cannot make any modern machines without all kind of chips. There are chips for controllers, there are chips for memory, there are chips for CPU, GPU. You have like uh, thousand different types of chips doing the different functions, just like different sensor. All the mechanical sensors which we used to have, or electrical, they have been now all kind of now integrated into chips. That is why that modern cars are very simple, but then you need chips. Chips, chips control everything. Not anymore all those mechanical system we had in the old cars. So India missed it a big way, and still we are not learning. I mean, all we have to do is that, just like China did, ask everybody to start manufacturing in India if you want to sell in India, and then it can be done. It can be done. Still, it is not late, but unfortunately, we have missed the boat, and a huge industrial jump we could have got. And as you know, that every scientific company you can think of, it's all the Indians who are in R&D, Indians and Chinese. Basically, R&D has one third are American, one third are Indian, and one third is
Chinese. That's how I have seen in America. I have almost more than 70% time I was in R&D part of the semiconductor, and basically it's all the three groups collaborate. So India has the brain; it doesn't lack the brain power. India has the lack of political will in. That is the problem. Yeah. So I don't know, but they are saying that now Vedanta will find another collaboration, and even Foxconn will find another collaborator to do things in India. Yeah, I mean that always happens in this industry. They always trying to find the new partners. Merger, acquisition. These are the common business thing. And I mean, these companies are big, but they are not the main players in the industry. Let's put it this way. Foxconn and Vedanta. I mean, Vedanta. Nobody knows when um, um, they don't have the scale. They are nowhere. Like when it come to, like, you would hear the name of AMD, um, or you will hear the name of Nvidia, but these are the company you hear when it comes to the technological leap forward. Who is doing, or TSMC, or Micron, or Intel. I mean, they are not in that league. Vedanta. These are the kind of small players. They do. It's just like, Chandigarh has one a small, from the very long time, a semiconductor plant. I have been tired of hearing that place. everybody, Now everybody starts. Sharad ji has joined us. नमस्ते सर। Namaste, Saraj. Namaste. नमस्कार नमस्कार। Namaskar. बड़ा वेदांता ये सब चीज के बारे में बात हो रहा है तो मैं बोला कि भाई अ, सुन लूं, बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है हर टॉपिक। हम लोग रिगार्डिंग डिस्कस कर सेमीकंडक्टर सर। डिस्कस कर रहे थे कि ये वेदांता जो फॉक्सकॉन के साथ मिलकर कर रहे थे वो ब्रेकअप हो गया है. यस So they are यस। looking for a technology collaborator now, both of them. So both of them will establish now in India. चलिए मैं खोज के दे देता हूँ किसी को, लंदन से अच्छा रहेगा। सही बात वो अनिल है. अग्रवाल जी से जान पहचान भी है तो बोलता हूँ मैं ही दे देता हूँ। हाँ नहीं आप वेदांता वाले अग्रवाल जी से आई थिंक ही इज वेरी सोशली एक्टिव. ही मिक्सेस विद ही इज अ नोन एवरीवन. पर्सन, और मेरे जीजा जी के जो बड़े भाई हैं अच्छा. तो वो उनके घर में उनका आना जाना है, और तो उनका उनको देखना चलता था तो हाँ। और मेरे और एक हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का फ्रेंड ज्ञानेंदु, तो ही वाज पोस्टेड इन उदयपुर हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में, तो उसका एचआर हेड था, तो वो भी उन्हीं का था। तो अभी तो उनका काफी एज हो गया, बट देन आल्सो ही इज एक्टिव एंड गोइंग अबाउट। यस। नहीं आज उनको मैं कुछ. बड़ा आई वाज इन अ आज मैं बड़ा सुबह से इलेक्शन कैंपेनिंग में था, और उसके बाद मेरे को एक जगह चीफ गेस्ट करके जाना था। आई वाज ए चीफ गेस्ट, तो आई वाज इन अ फिक्स ओवर देयर। मैं थोड़ा परेशानी में पड़ गया। क्या चीज. मैं एक जगह चीफ गेस्ट होकर गया था इलेक्शन कैंपेनिंग हाँ. के बाद, तो वहां मैं थोड़ा परेशानी में पड़ गया। क्या हुआ. हुआ ये कि इट इज अ वेरी मेजर वेरी फेमस चेन ऑफ केयर होम्स। हम्म. वुडलैंड मैनर बहुत फेमस है। तो उसमें मेरे को जज बनना था कि जितने वहाँ एजेड ऑल द एजेड लेडीज एंड जेंटलमैन, सब अच्छा अच्छा, कोई 103 साल के थे, कोई 97 ईयर ओल्ड, एंड ऑल ऑफ देम वेर वेयरिंग गुड गुड ड्रेसेस। नाउ हम्म. as a judge I had to choose one best person from amongst all of them, Oh my and God. I was feeling very guilty that if I say choose Pankaj ji and not Naveen ji or Aryan ji, then Naveen and Aryan ji will internally not be happy. तो मैं उसमें से एक लड़की थी, उसको मैं बोला कि तुम चुपचाप चुन लो, बोलना कि हम चुने। तो he chose one man, she chose one man, and I started having a drink here and there, जिससे कोई समझे नहीं और बात खत्म हो जाए। नहीं तो आई वॉज अच्छा. इन अ वेरी फिक्स कि भाई मेरे को जज बना दिया। अब बेचारे 97 ईयर ओल्ड, एक लेडी 103 ईयर ओल्ड थी, सब तैयार होकर आए थे, मेरे को चुनो, मेरे आप खराब लगे। वही
अच्छा, मुझे आपका सुन के अच्छा ये लग रहा है कि लगता है कि मैं भी 103 वर्ष तक जी पाऊंगा, लगता है। हाँ, और Yes, बताइए, sir. वो जो लेडी Yes, थी, sir. वो आराम से शॉल उल ओढ़ के बैठी थी, चल रही थी, मेरे से बात भी की, सुनी भी। हम बोले भाई 103 साल की है और बताइए, सुन रही है, ओ माय बोल रही है, गॉड। बैठी है। और एक यहाँ बताइए। पर गांव देहात में जाइएगा तो आपको हाँ 40 45 50 साल का हो जाइएगा तो आपको बूढ़ा बना देगा। हाँ हाँ, Yes, गांव में sir. तो होता ही है। यस इट इज। लकड़ी थमा देगा हाथ में कि लीजिए। अरे भाई काहे लीजिए, रूसी मोदी अंत तक यंग थे। तो भाई तो इसका मतलब मोदी साहब को अनदर 20 मोर इयर्स एज प्राइम मिनिस्टर अभी चल सकते हैं वो। योगा होगा तो कर ही जरूर रहे हैं। जरूर, हाँ। लेकिन धीरे धीरे अब नाउ स्लोली स्लोली आरएसएस हैज टू, जैसे जैसे उनका एज हो रहा है, सो दैट मामला मोनोटोनस नहीं हो जाए, स्लोली स्लोली आफ्टर दिस इलेक्शन जो समय आएगा, स्लोली स्लोली दे हैव टू लुक फॉर अनदर पर्सन हु हैज गुड फेस वैल्यू। पीपल जैसे से कि अमित शाह इज ऑलरेडी देयर इन द लाइन। अमित जी एंड योगी जी इज देयर इन द लाइन। I उनके think हज Yogi ji probably will be the next candidate because they ही cannot इज अ get गुड वन। back to back the same two friends, right? Uh, यस, there will be a lot of uproar if they do that one. तो कुछ तो जी जी। बदलना पड़ेगा, कुछ तो बदलना ही पड़ेगा। कुछ बदलाव नहीं तो क्या होगा ना, इंडियन मेंटालिटी इज डूइंग अ गुड जॉब, लेकिन इंडियन मेंटालिटी जो है दे बिकम थोड़ा टायर्ड ऑफ द सेम फेस ऑल्दो द पर्सन डज गुड जॉब। तो Yes. कंसिडरिंग दैट फैक्टर, द इलेक्शन आफ्टर दिस, उसके लिए थोड़ा अभी से थोड़ा देखना पड़ेगा कि किसको। अच्छा, आपके यहाँ वो टर्म सिस्टम, टर्म लिमिट है कि नहीं है लंदन में? इन द ब्रिटिश सिस्टम प्राइम मिनिस्टर का टर्म लिमिट है कि नहीं है? देखना पड़ेगा गूगल में, शायद As, 2 बार होता as है। like as like 2 times, maximum 2 times. हम तो सुने हैं 2 टाइम, अच्छा, लेकिन आपके यहाँ 2 टर्म है, क्योंकि हमारे यहाँ तो अमेरिका में है लिमिट 2 terms, मीन्स 8 years मैक्सिमम अच्छा यू कैन बिकम द प्रेसिडेंट। अच्छा, मेरे ख्याल में वो दैट यहाँ इज भी वेरी, शायद 2 बार है। हाँ, आई थिंक 2 term इज प्रीटी गुड। उसके बाद जो है तो आदमी ये बर्न लिखा आउट हो। हुआ है, जो टर्म लेंथ एट हिज मैजेस्टीज प्लेजर, माने किंग और क्वीन के ऊपर है टर्म। हम्म, अगर किंग अच्छा, या अंत में, यहाँ जितना भी हम लोग बोले रहा, किंग एंड क्वीन ही के हाथ में पावर है। अगर हम्म, वो लोग बोलेगा नहीं है वो चलेगा तो चलेगा, वही। हम्म। अच्छा। But China and Russia is a different thing. अरे चाइना एंड रशिया इज नॉट ए नॉट ए डेमोक्रेटिक कंट्री। वहां तो Yes, 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 sir. वहां तो मनमाना है। वहां As they तो wish. Yes, sir. एस वो दोनों ही आदमी दे आर Till life. सपोज टू फॉर द होल लाइफ, राइट? अभी दोनों का वही चल नॉर्थ रहा कोरिया का भी कुछ है, नॉर्थ कोरिया में जो हो रहा है। Yes, yes, sir. तो चतुरानंद जी, कुड यू स्पीक टू दैट करण, जो महिला समूह काम, जो आई गिवन यू द नंबर? नहीं, मैं तो नहीं उस ग्रुप का मेंबर हो सकता है, तो मैंने मिसेस को कहा है, तो हाँ, शी मैंने विल मिसेस को दे दिए कांटेक्ट। होंगे, मतलब हाँ, मिसेस को दिए होंगे। हाँ, पर उनका न्यूज नो, 18 कैन में आई हम एक बिकम प्रोग्राम मेंबर ऑफ करवा दैट रहे हैं ग्रुप? लेडीज का। हाँ, Then I can I be that? Huh? नो 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 नो, नहीं, खाली लेडीज, ओनली लेडीज। दैट्स आई मीन, आई आस्क्ड दैट इफ योर वाइफ माइट हैव, वाइफ को दे दिए होंगे। हाँ, so yeah, but yeah, she will contact them actually. Yes, yes. I advise them and help them, and try to keep them together. And also, I am helping them to organize a program in this thing, what we call in News 18. So by the end of July, they will have a program on News 18, which will go live in India. So I've told them to, because the ladies are doing good, so they should be motivated. So, Yes, yes. I think they should. so if they have any problem, any help, they just call me कि भैया शरद भैया भाई थोड़ा मदद कर दीजिए, ये कांटेक्ट दे दीजिए, तो आई जस्ट हेल्प देम। क्या है, लेडीज लोग अगर आगे बढ़ेगी तो हम। अच्छा, आपका न्यूज 18 में भी कांटेक्ट है आपका?
हर एक न्यूज में, ऑल द न्यूज पीपल, जो न्यूज बोलिए, रेंजिंग फ्रॉम Yeah. बीबीसी टू आज तक न्यूज, एनीथिंग। तो थोड़ा ये मिथिला राज्य का कहीं पर करवाइए ना थोड़ा सा इस एक्टिविटी, वो जो हम लोग डिस्कस किए थे। हाँ तो वो बोलो करवा देते हैं, एक बार हुआ था, फिर से उसको बोलते हैं कल्याण जी को, एक करवा देगा। अभी तो ये लेडीज सबका करण गोष्ठी महिला समूह का जुलाई एंड में करवा रहे हैं, और एक मिथिला राज्य वाला वो लोग को बोलते हैं कि करवा देगा, अगस्त में मिथिला राज्य का एक बोलते हैं। सितंबर में वो मिथिला स्टूडेंट यूनियन कुछ पहले एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करने वाला था दिल्ली में, पता नहीं उसके बारे में आप कुछ पता किए, क्या कर रहा है वो लोग? हम लोगों को कांटेक्ट किया था अमेरिका में कि हम लोग करने जा रहे हैं, आप लोग भी आइए, ये उसके बाद से जो है कुछ सुना ही नहीं है कि क्या हुआ। तो हम डायरी में लिख लेते हैं, अभी देखते हैं आप लोग से बात करने के बाद। तो कल सुबह सो गया होगा लोग, तो कल सुबह हाँ, हम उन मैसेज लोगों करके को पूछ हम उन लोगों को ट्विटर पर मैसेज भी किए कि भाई आप लोगों का क्या प्रोग्राम हुआ। आप लोग बोले थे कि आप लोग सितंबर में करने वाले हैं, तो इंटरनेशनल लोगों को बुला रहे हैं, तो फिर कौन कौन आ रहे हैं, तो जरा पता कीजिए अगर कुछ। अरे वो मेरे को हर एक महीना कोई ना कोई बुलाता है, ये सब चीज में बेसिकली आई डोंट नो इतना दूर से जाना। लेकिन हाँ, मेरे को तो तुरंत मैं अभी रात में हेलो हाय करके, नहीं तो कल सुबह पूछ लेता हूँ, तो डायरी में लिख राइट, लेता हूँ, राइट, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। और 100% मैं बोल देता हूँ आपको कैसे भी। हाँ, और सब क्या चल रहा है इंडिया में? अब तो बच्चे लोग निकल गए हैं ना, वी आर एडल्ट ओनली, सो वी कैन टॉक लिटिल बिट अबाउट समथिंग एल्स। इंडिया में क्या सब हो रहा है, पूरा समझाइए हम लोगों को, जरा जानना इंडिया चाहते हैं। में नरेंद्र मोदी बीजेपी गवर्नमेंट एक तरफ और दूसरा सब एक तरफ मारा पीटी किया हुआ है, और कृष्ण भगवान जो है हम लोग, तो कृष्ण भगवान बोले ले लो यादव सेना खेलो। अब बाकी एक चीज अच्छा है, वन थिंग इज गुड दैट बिकॉज ऑफ दिस कश्मीर फाइल एंड ऑल दिस स्टफ, एटलीस्ट ये है कि हिंदू लोगों में थोड़ा थोड़ा स्लोली स्लोली जागरूकता पैदा हो रहा है। लेकिन अभी भी लिबरल सेक्युलर वाले लोग थोड़ा ज्यादा है, वो धीरे धीरे बदलेंगे। तो तो अगले इलेक्शन में होगा क्या? आई मीन व्हाट इज द चांस मोदी विल कम बैक और नॉट? पंकज जी, नहीं, मोदी विल आपका? कम बैक। Yes, sir. हाँ? We will come, sir. Sure, sir. अच्छा, अच्छा, क्योंकि ये लोग जिस तरह से उनको डिरेल करने की कोशिश कर रहा है सब मिल नहीं, करके। आप लोग सुने होंगे ना, ममता बनर्जी हैज, she has not directly told, she indirectly someone has told that next candidate ममता बनर्जी is the candidate। 2 अक्टूबर को ये लोग दिल्ली में रैली करने जा रहे हैं। ममता बनर्जी, यस। ममता तो बनर्जी खरीद देगा। ओनली, और ममता बनर्जी अपने, या मतलब पूरा ये कांग्रेस कुनबा के साथ, सबके साथ मिलके? नहीं नहीं, अकेले ये करने जा रही है इसमें, जो कि ये कह रही है कि यहाँ पर जो मनरेगा प्रोग्राम जो है उसमें वेस्ट बंगाल का जो पैसा ड्यू है उनको नहीं मिलता है, तो दिल्ली जाकर के रैली करके वो पैसा जबरदस्ती मोदी के पॉकेट से खींच के लाएंगी। अच्छा, अच्छा, हाँ, तो अभी बहुत बड़ा रैली कलकत्ता में हुआ था, अभी उस दिन हम घर से निकल नहीं पाए, इतना इतना भीड़ इन लोगों ने जमा किया था। इट्स ऑल पेड, मोस्ट ऑफ द पीपल वेर पेड। हाँ, हाँ, वो तो मतलब वो उसी किसके लिए, वही उनको प्रोजेक्ट करने के लिए, ममता बनर्जी को नहीं, प्रोजेक्ट करने के लिए? 21 तारीख को हुआ था। शी वांटेड टू शो दैट शी हैज सो मच ऑफ फॉलोइंग, सो शी इज ए गुड कैंडिडेट फॉर प्राइम मिनिस्टरशिप। हाँ, तो 21 जुलाई को ये लोग शहीद दिवस मनाते हैं। शहीद दिवस इसलिए कि जब वो कांग्रेस में थी 94 या 95 में, उसी दिन शायद 20 या 25 लोगों को मार दिया गया था सीपीएम वालों ने। उस समय ममता बनर्जी कांग्रेस में ही थी, तो अच्छा, उसी अच्छा, 21 जुलाई को ये शहीद दिवस मनाती है। और लगभग 15 लाख लोग, कहते हैं 15 लाख ये लोग पूरे वेस्ट बंगाल से लाए थे, एकदम से पूरा। इट वॉज ए वेरी बिग, माने वो सारे तो ट्रैफिक जैम पूरा कलकत्ता में। हाँ, वही पैसा वैसा दे के ये सब करके फिर। शी वांटेड टू प्रूव दैट शी हैज ए मास फॉलोइंग, unlike नीतीश कुमार और थिंग्स लाइक दैट। So Arvind that was the Kejriwal, image. Nitish Kumar, Mamta Banerjee, a lot of candidates.
Hey, that is not bad, but Yes, unfortunately, sir. I don't think they are on the same मैंने मोदी जी ने एक चीज ठीक कहा है कि वो लोग पास पास हैं पर साथ नहीं है। हाँ वो Only, तो है ही। only for motto is selfie. नहीं, इस बार तो मोदी ही जीतेंगे 24 में, हमको तो जो लग रहा है। Yes, sir. अभी उनको रोकना मुश्किल है अभी। नहीं, बात प्रॉब्लम है कि देखिए धीरे धीरे अब तेलंगाना हुआ, तेलंगाना, बिहार, बंगाल, मणिपुर, कश्मीर तो है ही। कश्मीर का शुद्धिकरण हो रहा है, विशुद्धिकरण। लेकिन तेलंगाना, बिहार, बंगाल, केरला तो एक तरह से बेसिकली उसमें सीरियस चेंजेस चाहिए, जो कि उतना आसान नहीं है। लेकिन जब तक बीजेपी गवर्नमेंट है कुछ कुछ एटलीस्ट होगा। और हम्म। अब हम लोग के बाद वाले जनरेशन के लिए 1:5:4 है, वो भी है। यहाँ एक दो बच्चा करता है, वहाँ 5 बच्चा, तो फिर देयर इज नथिंग बैड अबाउट इट। लेकिन वो लोग तो नहीं बोलेंगे कि तुम 5 बच्चा नहीं करो। यहाँ पर तो आजकल फैशन हो गया कि बच्चा है नहीं करेंगे। तो धीरे धीरे जनरेशन generation after us will face the problem, but we have to see how to keep all the 28 states at an equilibrium on various fronts. वही है। तो देखिए क्या होता है। हाँ, आप लोग का वहाँ 10:35 हो गया है चतुरानंद जी, हाँ, तो देरी हो गया है। And, तो चलिए how is the पंकज, weather there? पंकज जी अच्छा बहुत बढ़िया शो रहा। पंकज जी, शरद yes, जी, sir. वो उनसे बातचीत Thank हुआ, you. वो जो Thank you. हम मैथिली हम न्यूज़पेपर वाले से? मैथिली न्यूज़पेपर और ये यूनियन वाले से मैं कल आपको बताता हूँ। ठीक ठीक है, हमने कैसे करेंगे 100%। सो वो मेनी पीपल आर देयर हु आर। धर्मेंद्र कुमार झा से कल मैं बात करता हूँ। देखिए ये इंडिया वाला जो टीम है उसको चाहिए जो हमारे पंकज जी जैसा कन्वेनर चुने, जो एकदम लगे रहते हैं एकदम। 3 साल से लगे हुए हैं सर, कंटिन्यू। और मॉर्निंग में लाइफ आपका टाइम का। कैसा रहता है? दोनों ही यस सर, टाइम अपना मॉर्निंग। काम करते रहते हैं। तो ऐसा कन्वेनर उन लोगों के पास जब तक नहीं होगा, ये इंडिया के पास, वो मोदी जी का टक्कर कैसे लाएंगे? पंकज जी जैसा उनको कन्वेनर चाहिए, तो ढूंढ के दीजिए उन लोगों को। थैंक यू सर। नहीं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पंकज जी, कीप इट अप। तो आपका डिनर हो गया चतुरानंद जी? नहीं नहीं, अब जाएंगे, इसी के लिए वेट कर रहे थे बस। अच्छा अच्छा अच्छा, डिनर कर लीजिए, तो 11 बजने वाला है। हाँ तो ठीक। अच्छा, अभी क्या आप सावन बनाते हैं कि नॉनवेज खा रहे हैं? नहीं, हम लोग तो नॉनवेज खाते ही रहते हैं। खाते ही रहते जी हैं। जी। मेरे घर में मेरी वाइफ अभी संडे हो या 21 मंडे। तारीख तक होगा। कहीं घर में कलकत्ता में नहीं तो बन रहा है, बाहर जाएंगे तो फिर खा लेते हैं। कलकत्ता में जी ये जी। रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता है जनरली। हाँ 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 हाँ। अच्छा। चलिए तो बिहार के ठीक है। आप शरद जी, बिहार के पॉलिटिशियन में ककरा ककरा संगे आके गपशप हुई है? हमरा सब संगे होइ छै। नीतीश जी और चिराग पासवान आयल रहे, निरहुआ जी कहलकै, निरहुआ यही ठाम छै 20 दिन से कहलकै कि शरद जी मिलिए उलिए। हम बोले हम टाइम नहीं छै, अपन कहलिए कि अभी क्योंकि वो कहीं मिलिए तो टाइम दीजिएगा ना, कब रहेंगे, तो थोड़ी सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहेंगे। तो चिराग पासवान छथिन, विनोद नारायण झा, संजय कुमार झा, सब संगे बातचीत छै हमर। अच्छा अच्छा। पर्सनल बातचीत छै। तो अपना मैथिल कम्युनिटी के लीडर छियै एखन ओइठाम? केओ छै एकटा एहन कि सब पार्टी में सब स्कैटर्ड छै एखन? कोनो जेना लीडर तो एहन नहीं छै जेना मैथिली में। एलन, हाँ संजय कुमार झा कनी मनी नीक पोजीशन पे छथिन। और अगर मैंने कि कहूँ कनी मनी रत्ती भर पावर छै तो संजय कुमार झा और वो जो गोपाल चंद्र ठाकुर हाँ, छथिन उनका दरभंगा के, हाँ दरभंगा कनी के। मनी छथिन, और सबके तो वह हाल छै। अच्छा अच्छा। मनोज कुमार झा स्पोक्स पर्सन छथिन, नहीं तो वो रामप्रीत मंडल अहाँ के झंझारपुर के ओ कनी मनी छथिन। लेकिन ओना तो मिला जुला के अहाँ के वह हाल छै। अच्छा अच्छा। नहीं, एहिमे तो शरद तेजस्वनी जी के के बढ़िया। की, शरद जी अहाँ के रिमोट से काम करऽ पड़त, एहिमे नहीं तो आगू ई बढ़े वाला नहीं छै।
नहीं वो जरूरी है कि हमरा देखू तेजस्वनी से लोग सब संगे बढ़िया छे और अखन एठाम बीजेपी के अखन फेस छे हमर एक भक्त छे एठाम वेदांत वर्मा एडिनबरा स्कॉटलैंड यूनिवर्सिटी में छे बीजेपी के नेक्स्ट फेस छे हुनकर फादर कलेक्टर रहथिन ओहिठाम के पटना ओ के हुनकर नाम वर्मा जी छे सुनील वर्मा ही इज द नेक्स्ट फेस ऑफ बीजेपी तो वो अहाँ के एठाम आयल रहथिन कहलखिन हमरे घर में 3 दिन रहता लेकिन नहीं भ सकले अखन क्योंकि लेकिन ही इज द सुनील वर्मा इज अ गुड नेक्स्ट फेस ऑफ बीजेपी अखन बिहार के एहि और बेर और एकटा छथिन और एकटा इलेक्शन से बीजेपी फ्रेंड पहले छथिन यदि किछु नहि कयल जेतै कि नहि तऽ नहि किछु हेतै तकर बाद नहीं है इलेक्शन से पहले करे किछु मिथिला के हाँ, बात छै ने कोनो पॉलिटिकल पार्टी गप नहीं कर रहल छै एकोटा पार्टी जे अपना एजेंडा में देते ने जे मिथिला स्टेट से सएह हिनका सबके कहै छै अहाँ सब दिल्ली में एतेक गोटे सब छी मिथिला स्टूडेंट यूनियन वाला सब अहाँ सब जाकऽ सब पॉलिटिकल पार्टी के पहिने ओकरा सब संगे तऽ गप करू ने खाली सब गोटे की करै छथिन तऽ ओहिठाम जाकऽ जंतर मंतर पर एकटा मीटिंग कऽ दै छथिन नहीं नहीं वो फालतू कह के ओकरा चुपचाप बैस जाइ छै वो इलेक्शन के एजेंडा छै ये करेंगे वो तऽ ई जंतर मंतर पर खाली बैसला से थोड़े हेतै एकर तऽ गपशप जाबे तक अहाँ पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंडा में नहीं आनब एको दूटा पार्टी जे छै अब दरभंगा में सरावगी जी छथिन हाँ छोटको पार्टी सब कम से कम तऽ एक्सेप्ट करते ने जेना मुकेश साहनी छै अपना सब हाँ दिसका छियै दरभंगा के छी आब ओकरा बेचारा एखन एम्हर से उम्हर भऽ रहल छै कतौ के पता नहीं कोन दिशा ओकर हैत तऽ जेना ओकरा पकड़ल जा सकै छलैया रामविलास पासवान के बेटा के छै ओ सब वो बढ़िया छै रामविलास के पासवान चिराग पासवान वो बेचारा बढ़िया कह रहल छै हाँ तऽ जेना ओकरा और पकड़ल जा सकै छै अहाँ मिथिला स्टेट के सपोर्ट करू अहाँ बनू चीफ मिनिस्टर मिथिला के ओहिठाम हाँ तऽ बनू मगध में तऽ अहाँके चलै वाला नहीं अछि कहियो नहीं बनि सकब हाँ मगध में तो विनोद नारायण झा के संगे हम गेल रहिए नाश्ता पानी चल रहल छले तो हुनका बेटा विभय कुमार झा सेहो अहाँ के लोकतांत्रिक पार्टी ओ चिराग पासवान के पार्टी में ओकर राइट हैंड मैन छै हाँ चिराग पासवान के हाँ तऽ वो बढ़िया कऽ रहल छै विभय हाँ हमरा बड़ इज्जत करे छै ओहो बढ़िया कऽ रहल छै लेकिन से चाह नहीं तहन एकटा हिनका सबके रीजनल पार्टी ठाढ़ करक चाहिए ओहिठाम लोकके हाँ 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 मिथिलावादी पार्टी किछु कऽ कऽ तऽ यदि नहि होइ छै तऽ सेहो ठाढ़ करक चाही तऽ ओहो सब नहि किछु छै बेसिकली मूवमेंट में कोनो जाबत तक किछु ट्रैक्शन तो नहीं अबै पहले की कोनो छै कि अमरनाथ जी देखो हम बलिए चतुरानंद जी अहाँ मने एहन लोक सब पहिने अब सोचू हम अब सब संगे गप करब तो एक एजेंडा चाहिए कि हम तुम लोग क्यों एक साथ होगा क्या होगा मिथिला पार्टी क्या होगा तकने ना नहीं तो अलग अलग पार्टी के लोग छे एक संगे नहीं ना है नहीं तो बिल्कुल सही बात छै नहीं 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 ई छै ने देखियो टू प्रॉन्ग हुआ चाहिए एकटा तऽ इहो रहक चाही जे सब पॉलिटिकल पार्टी में इनरोड हुए तऽ बढ़िया बात छियै किछु किछु गोटे सब पार्टी में जाकर जोर लगाबत जे अहाँ सब हमरा मिथिला स्टेट के सपोर्ट करू करू हम सब वोट देब आ दोसर एकटा अलग से इहो यदि भऽ जाय जे एकटा पार्टियो ठाढ़ भऽ जाय तऽ ओहो हर्ज नहि छै कारण जे पता नहीं ऊँट कोन करबट सब बैसत कोनो ठेकान तऽ छै ने ताहि दुआरे लड़ाई तऽ सब ठाम यदि थोड़ा बहुत के जोगाड़ रहे प्रवेश रहे पब्लिसिटी होय तऽ बढ़िया बात छियै लेकिन एखन कहाँ कतौ देख रहल छी कोनो पॉलिटिकल नहीं फ्रंट पर पिछला किछु बार नहीं पटना में हम बैस के भोरे नाश्ता में चूड़ा दही खा रहल छलिए तो शाहनवाज जी सेहो हमरा फोन करने रहथिन हाँ हम कहलिए महाराज वो दिल्ली चल गए भाई शरद जी देखिए दिल्ली में है मुलाकात मतलब कि भाई वो नहीं प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन भ रहल छलै राइट 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 वो दिल्ली चल गेल रहथिन हम कहलिए भाई हम तो पटना में है तो मुलाकात नहीं भ सकले तो ओहो हुनको मने कि रिलेटिव में किछ किछ बढ़िया छै स्मार्ट छै हाँ नहीं नहीं ओहो शाहनवाज छथि हिस्सैन जी सेहो ओ बीजेपी तऽ के छथिन कतौ अपन मैथिले छथि ने कृष्णेगंज दिसका छिया ओ हाँ शाहनवाज बीजेपी के छथिन हाँ लेकिन मैथिली स्पीकिंग छथि ओहो अपने सब हाँ हाँ दिसका छथि मैथिली हाँ कतौ तऽ हाँ मतलब मैथिली स्पीकिंग जेना छै तऽ जेना ओहो हुनको सबके पकड़ल जा सकैया हाँ लेकिन हुनकर बड़की बहन ई सब दरभंगा के छथिन राइट हुनकर राइट दामाद सब हाँ हाँ तऽ एखन बहुत काज करऽ के बाकी छै एकदम बुझू जे नीक लोग छथिन शाहनवाज हसन सेहो नीक लोग छथिन बढ़िया हाँ अच्छा अच्छा तऽ इएह छै तऽ आब पवन जी मल्लिक जी हिनका अहाँ सबके आब भोजन के टाइम लेट भऽ रहल अइ अहाँ सब ठीक आब छै ठीक भोजन छै करू तहन ऑल द बेस्ट और ऑल द बेस्ट पंकज जी ऑल द बेस्ट ऐसा ही दरभंगा और मिथिला यूनियन ऐसा ही मुद्दा कभी हम कभी अखन कैसे ऐसे ही कभी कभी अपना सुनहरा चेहरा दिखा दिया कीजिए
तो पंकज जी का इसलिए खाना हो साइलेंट गया? रहते हैं सर। नहीं सर, अभी नहीं सर। तो खाना खा लीजिए, देरी हो गया महाराज। हाँ, चलिए फिर। ओके, गुड ठीक है, गुड मॉर्निंग, गुड गुड नाइट, नाइट। गुड गुड नाइट, नाइट बेस्ट विशेस। सर।